of water resource. One I said that groundwater resource, and another I said that surface water resource. Understood? और ये सारा आपके नोट्स में है. It is there in your notes. लेकिन जो मैं कुछ बताऊंगा, it will not be. So, we are going to see the water resource, and then water resource. If I talk about India is having, I said that India is having, I said that 100 hours of rainfall. Understood? And it is in a fifth in the world. जो पानी हो रहा है, it is fifth in the world, and then rainfall that is happening, it is, I said that जो water जो available हो रहा है, it is in a 4,000 billion cubic meter water. How much? 4,000 billion cubic meter water you can say, or 4,000 cubic kilometer water. मतलब 1 kilometer length, 1 kilometer depth and all. इतनी पानी 4,000. What is a billion cubic meter water. Every year this much of the rainfall is taking place. After that, in our hand, it is, I said that around, I said that 1900, or better to say that 2000 water is, 2000 billion cubic meter water is available, and out of this 2000 billion cubic meter of water, out of this 4,000, 2,000 which has been, I said that evaporated, and some other things which has been happened. Understood? Clear? क्योंकि हमारे इंडिया में हीटिंग भी तो बहुत ज़्यादा होता है. Understood? Sub tropical and tropical country. And in this one we can be able to see इतनी पानी हमारे पास available है. लेकिन हम लोग इसमें से कितना यूज कर पा रहे हैं? वी आर एबल टू यूज 1, 2, 3 यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, इट इज समवेयर ऑन द सी सरफेस, और जो कि हमारे कहीं ना कहीं वाटर ग्राउंड हियर एंड देयर इट इज गोइंग. एंड देन 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर, एंड देन वी कैन बी एबल टू सी, लाइक आई सेड दैट ग्राउंड वाटर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? Ground water 433 billion cubic meter. How much? 433. Understood? And if I'm talking about out of this 433, if we'll see, like I said, out of this around 343 in the groundwater, 343 in the groundwater, and around 90 it is in a recharging from the here and there, but 90 billion cubic meter it is recharging through, I said that it is recharged through, I said through canals. Understood? तो canals has been formed, और canal में पानी रहता है धीरे धीरे. It is also helping in the recharging the underground water. This canal irrigation system here and there, it is there. And if we talk about that
So out of this groundwater is how much? There is a replenishable. How much replenish every year? 433 billion cubic meter. And in this one, generally from anywhere it is recharging, it is going. कहीं पे भी बारिश होता है पानी तो नीचे जाता है. From the mountains, from the desert, from anywhere region, alluvial soil, then southern plateau region, everywhere it is going down. So it is how much? 343. But through the canal irrigation system, especially in the North India, it is, I said that, 90. Now there is a surface water, and this surface water, I said that, जो हम लोग कहीं न कहीं, I said that we are, I said that 6, I said 90 billion cubic meter surface water. Understood? So therefore we can be able to see the total water which is, I said that we have somewhere around that it is, I said, yes, tell me how much? How much it is? Yes? 1123 billion cubic meter. 1123 billion cubic meter. This is clear to you? How much? 1123 billion cubic meters. Shall I remove now? Understood? Groundwater. Another I said that surface water. में हमें इतना रेनफॉल मिलता है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग पर ईयर. Now I said that IDIE. Can you remember this one? IDIE. First I said that I means irrigation, D means drinking water supply, and then I means next industry, and E means energy, and thereafter other. Thereafter I said that other. Okay. And if I am talking about in the irrigation, we have use of water in irrigation. कितना आज के डेट में डिमांड? Around 700 plus भी है थोड़ा सा. How much I said that? 700 billion cubic meter हम लोग केवल irrigation से पानी को ले रहे हैं. और इसमें दोनों वाटर है. Which I said that surface water is also included, and which one I said that ground water. Understood? Next one, और हम लोग देखेंगे कि why the ground water use. If I say that earlier we are mainly dependent on surface water for the irrigation, और आज भी देखा जाए तो surface water irrigation is cheaper than the ground water, क्योंकि ground water निकालने के लिए we need, I said that, pumping sets. Yes or not? Pumps, tube wells and all. Therefore they become costly, and the government is providing. लेकिन हुआ क्या कि the government started giving what I said that cheap electricity to the farmers, subsidized electricity to the farmers. And when they started getting subsidized electricity, so suddenly they, from the surface irrigation, they moved towards what? Groundwater irrigation. And everywhere they started doing groundwater irrigation. Understood? And एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू मैनेज दिस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिकॉज आज के डेट में क्या हो गया, एवरीवेयर ट्यूबवेल से यदि हम लोग थोड़ा सा वी शुड वर्क ऑन, नहीं तो हमारे यहाँ आने वाले समय में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, लेकिन उससे पहले नहीं तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा, कम. उससे पहले वी हैव टू मैनेज द वाटर रिसोर्स. यदि वो ग्राउंड को नहीं करें तो सरफेस को तो करें. दे शुड हैव अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर अवेलेबल होगा, देन दे कैन बी एबल टू डू ना. अदरवाइज दे हैव टू डिपेंड. आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा भी दोगे तो भी वो उसी से करेंगे. सो आई सेड दैट थोड़ा सा मैनेजमेंट भी करना होगा. आई सेड दैट इरिगेशन 700. अंडरस्टूड? एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट विल बिकम 1100 in 2050.
Why? It has increased by how much? It has increased by how much? 50%, means 1.5 times. 50% increase by 2050. Why? The population increase, and for the population we need food. Food के लिए हमें चाहिए food security, and therefore we need irrigation to produce more agriculture. और हमारे पास आज के डेट में कितना अवेलेबल है? 1, 1, 2, 3. आने वाला समय कितना खराब होने वाला है पता है आपको? सोच के अभी देख लो, ये फिगर देख लोगे, then you can understand that. Thereafter, drinking water supply, if I say that it is in a 60, how much? 60. Drinking water supply is how much? 60, and it will become around 120 in 2050. So drinking water supply कितना बढ़ गया? 100% बढ़ गया. इसका मतलब 2 times it has increased by 2 times ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज होता है? फर्स्ट इरिगेशन, देयर आफ्टर इट कम्स टू विच, अंडरस्टूड, एंड देन इंडस्ट्री. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जबकि हमारे यहाँ अभी भी इरिगेशन बहुत एरिया में नहीं है, ड्रॉट प्रोन एरियाज आर, ड्राई एरियाज आर देयर. एंड इंडस्ट्री यूजेस अराउंड, आई सेड दैट industry uses around, if I am talking about 15 billion cubic meter. Industry uses around 15 billion cubic meter, and then its demand will be around, we can say that 70 to 80. 70 to 80, and it will increase by how much? 5 times. It will increase by how much? 5 times. Understood? दिमाग में सेट हो गया what I said that? 700 becoming 1100. Irrigation, drinking water supply becoming 2 times 60 to 120. And then industry will become 15 to 70, 80. Yes, आज के डेट में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, but in the future there will be, India is going to become the superpower in the economy in the coming time. Energy we are using around, I said that 6 billion cubic meter. तो आने वाले समय में देयर विल बी प्रोड्यूस वाटर रिलेटेड एनर्जी प्रोडक्शन, या थर्मल पावर प्लांट है, चाहे कहीं पे भी हम लोग यूज तो कर रहे हैं, गैस से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं पानी कोई. यस, पानी तो हमेशा यूज करना ही पड़ेगा स्टीम कन्वर्ट करने के लिए. एंड देन एचईपी में वी आर यूजिंग मोर. इन द कमिंग टाइम्स इट इज बिकमिंग 130. इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? 130 billion cubic meter required for the production water utilized in the energy sector में प्रोड्यूस करने के लिए. एंड यदि मैं इसको 5 लिख देता हूं, then it will becoming around 26 time. How much it is increasing? 26 time. क्योंकि जब हम लोग एनर्जी इकोनॉमी बनेंगे, the world super power will become, then you can think like I said that there is a high demand will be there. And if I am talking about in others around, you can say that 100 and all. और यहाँ पे others का भी बहुत सारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, 200, 300, whatever it is. और जबकि इतना होने के बाद जो हम लोग 700 बिलियन क्यूबिक मीटर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द सरफेस, एंड व्हाट I said that through the surface and groundwater irrigation, but it is not sufficient. It is not sufficient. Understood? Or it is able to cover 139. हमारे पास लैंड कितना है? यस, टेल मी.
328 आपको पता होगा. And we are able to provide, I said that 139 million hectare of the land on the basis of gross you can say. लेकिन हम लोग interlinkages of the river कर दें तो water surplus region of north will be able to connect with the water deficit region of the south, and the several other regions can be also covered under the irrigation जहाँ पे irrigation नहीं पहुँच रहा. And इसकी वजह से we will be able to reach 175 million hectare of the land.